In democracy, first to learn this. This is the first section. So, first 3 hours is your done for basic. This is the first step. Now, second step. Whatever you cover in the NCRT, now we're going to read the current affair section. Hello, good evening, friends. This is Ashok. I'm working here as a career counselor. Today, I'm going to share with you some strategies for UPSC and State PCS, because in India, around 12 to 13 lakhs top students fill this form, and appearance going to appear only 6 lakhs, and around 3 to 5 lakh students give the final prelims exam. So what are the key factors I'm going to tell you? You need to cover if these aspects. So you don't need to join any other system or any other guidance. You need to just follow this basic frame steps. So I hope this will you support. So now take a look. As we can say, in first part, we cover the prelims and mains strategy. Prelims and mains strategies. What are the basic thing? Very most important thing on this part is NCRT. Very most important. Because in UPSC and State PCS, around 40 to 45% questions indirectly came from this here only, means NCRT. And 35 to 40% questions UPSC asks from this part only. So this strategy is very important. Here I am going to give you. Let's say we take a polity. In polity, first you cover the basics, NCRT. You know our constitution is framed on 26 November 26 December 1949. You're going to amend. And this, our constitution, will prepare in 2 years, 11 months and 18 days. Our whole founding fathers take this period to prepare this, right? Now, the main part I'm going to cover. What is the key strategy every aspirant should be followed on daily basis? What is the ideal daily schedule of the UPSC aspirant? Daily schedule. For UPSC. First, you need to cover NCRT. So first learn 20 to 25 page on daily basis. First, in the morning, what should learner cover in the first 3 half? Means suppose learner is going to wake up whatever the times, between whatever suits you, 5 a.m. between 8 a.m. किसी भी टाइम आप उठ गए, आप इस टाइम के अंदर जैसे ही उठे, आपको यहाँ पे उठ के आपका डेली रूटीन काम किया, अराउंड 30 पेज यहाँ या फिर 20 पेज, 30 टू 35 पेज पढ़ना है एनसीईआरटी का. पहला रूल, फर्स्ट रूल. इससे क्या होगा? इससे दैट्स कवर योर स्ट्रेटेजिक, यू कैन से द स्टैटिक पार्ट. You going to understand the whole picture and the whole scenario. Means you're going to understand the whole dimension of the what is the history, who are the founding fathers, and who is going to create this, from which
country and which state we are taking this constitution. These are the basic steps. And what are the topic? In NCERT, going to study democracy. Right? In democracy, first to learn this. This is the first section. So, first 3 hours is you're done for basic. This is the first step. Now, second step. Whatever you cover in the NCERT, now we're going to read the current affair section. Whatever you learn in the current affair, you decide by your NCERT. Means the topic you covered in NCERT means you're going to study the polity only. Why I'm telling you this? Once first you learn the NCERT, the basic. So here you know the basic background of the democracy in 30 to 35 pages. In 30 to 35 page, right? You know the now the base. After that, in the current, when you're going to the polity now, right? In nowadays, what is the topic going on? It is UCC, Uniform Civil Code. What is Uniform Civil Code? Means one nation, one religion. It's same like one nation, one tax. Means it's passed the GST in 2017, 1st July 2017. So this topic is going on. Now you understand the base after reading NCERT. Second, now you're going to study what is the trend going on in the polity, in the current affair. Now come to the third part. This is the final part. In third part, till now what you cover? Static portion from the NCERT and the current scenario, means current affair, whatever is going on. So you know till now you know the static means base and current means what is going on, means what is the trends going on. Now come to the third part, that is the final part. In third part, you going to practice prelims and mains answer writing. In prelims, you going to practice, आप प्रैक्टिस करेंगे 7 से 9 क्वेश्चन पर डे डेली बेसिस पे, मीन्स इसी एनसीईआरटी का आपको करना है पॉलिटी का टॉपिक, आप PYQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। PYQ, इससे आपको मिलेगा पैटर्न। पहले आपको मिला बेस, फिर मिला ट्रेंड अभी चल क्या रहा है, और फिर इससे मिलेगा पैटर्न कि आपको क्वेश्चन कैसा आ रहा है। नाउ कम्स टू द फाइनल पार्ट इन द मेंस। इसमें आपको करना है ऑन एन एवरेज 2 to 3 क्वेश्चन डेली बेसिस पे। इससे आपको मिलेगा स्ट्रक्चरिंग। होप यू अंडरस्टैंड दिस। इन दिस स्ट्रक्चरिंग पार्ट आपको एक कंप्लीट पिक्चर होल सिनेरियो मिल जाएगी कि मुझे आंसर स्ट्रक्चरिंग कैसे करना है, फ्रेम कैसे करना है पहले PYQ को करते हुए। अब इसको करने का फायदा क्या होगा, ये डेली शेड्यूल जब आप फॉलो करोगे तो इससे आपको एक ही शेड्यूल, आप जो शाम को व्हेन यू गोइंग टू द स्लीप और नाइट, आपको फाइनली क्या मिलेगा, सेम टॉपिक का एक कंप्लीट फ्लो, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट टू कवर डायमेंशन एनसीईआरटी बेसिक्स, देन व्हाट इज द ट्रेंड गोइंग ऑन मींस UCC, करंट सिनेरियो क्या है, PYQ आपका एनालिसिस डेली बेसिस पे, आप इस समय पैटर्न कैसा है क्वेश्चन का UPSC का, और देन मेंस आप अभी स्ट्रक्चर कैसे करोगे लास्ट ईयर क्वेश्चंस देख के। इससे कंप्लीट फॉर्म मिलेगा। अगर ये शेड्यूल आप 1 साल फॉलो करते हो, अब इसका आपको एनालिसिस बता देता हूं। अगर आप प्रीलिम्स ऑन एन एवरेज डेली आप 15 क्वेश्चन पर डे करते हो प्रैक्टिस, तो मंथ में आपके हो जाएंगे, लेट्स से कम टू द नेक्स्ट पेज। अगर आप प्रीलिम्स कर रहे हो 15 क्वेश्चंस पर डे,
मीन्स 450 क्वेश्चन इन अ मंथ। तो ईयर में कितना हो जाएगा? 12 इंटू 45, ये ऑन एन अप्रॉक्स से हो जाएगा आपका 7500 क्वेश्चंस आप कंप्लीट करोगे। ऑन एन एवरेज में निकाल रहा हूं, इतने क्वेश्चंस आपके 7000 आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे प्री का बाय योर ओन। देन मेंस आपने कितने क्वेश्चंस कर रहे थे? 2 to 3 इन अ डे। मीन्स मंथ एंड में आपके हो गए 60 क्वेश्चंस। तो 1 ईयर में 720 क्वेश्चन, 12 6 जा 72। तो आपके पास फाइनल क्रक्स आ गया। जो आपने अब तक किया, बेसिक एनसीईआरटी प्लस करंट अफेयर प्लस पीवाईक्यू, आपने इतना डेली करना है। सेम टॉपिक फॉर दी सेम टॉपिक। तो इससे आपका होगा क्या फ्रेंड्स? एक ही टॉपिक आपने जो पढ़ा, सपोज जो आपने पॉलिटी किया, लेट्स से आपका टॉपिक हम ले लेते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स उस दिन के लिए आपका बेस, करंट ट्रेंड और पीवाईक्यू, आपका प्रीलिम्स और मेंस, ये दोनों कवर हो गया। तो इससे आपका फुल कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और एक साल बाद आपका प्रीलिम्स में 7000 क्वेश्चंस और मेंस में अराउंड 750 क्वेश्चंस, ये कवर आपने कर लिया खुद से बाय सेल्फ। अब आपको किसी की जरूरत नहीं। और नाउ आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लोगे, देन फाइनल ओवर। सो आई होप ये आपको फंक्शन जो बताया ये हेल्प किया होगा। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।